अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x5 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट वी कैन डू x5 ओवर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1। नाउ लेट n इज इक्वल टू x5 एंड d इज इक्वल टू x4 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1। एज इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2x क्यूब प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी ओवर एक्स के प्लस वन प्लस एक्स प्लस डी ओवर एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, नो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर, वी गेट टू एक्स क्यू प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी इंटू एक्स के प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी। ये पहले ये मल्टीप्लाई करना है इनको स्टूडेंट, देन हमने क्या करना है, सिमिलर वेरिएबल वाली टर्म को गठा कर लेना है, जैसे एक्स क्यूब वाली टर्म्स को, एक्स स्क्वायर वाली को, एक्स वाली टर्म्स को और कॉन्स्टेंट्स को गठा कर लेना। देन हमने क्या करना है कि एक्स वेरिएबल्स को कॉमन ले लेना है, जैसे 2x क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ax क्यूब प्लस bx के प्लस a प्लस c into x प्लस b प्लस d। नाउ वी हैव टू कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब x स्क्वायर x and constant of equation 3 on both side. By comparing x cube we get value of a which is 2. By comparing x square we get value of b which is 0. By comparing x we get value of c which is minus 1. And by comparing constant we get value of d which is 0. Now put values of a, b and c, a, b, c and d in equation 1. We get 2x cube plus x square over x square plus 1 का whole square is equal to 2x plus 0 over x square plus 1 minus 1 x plus 0 over x square plus 1 का whole square which is equal to 2x over x square plus 1 minus x over x square plus 1 का square. So which is equal to x minus 2x over x square plus 1 minus x over x square plus 1 का whole square, which is equal to x minus 2x over एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 6 हो चुका है हमारा कंप्लीट, ये एक्सरसाइज भी हो चुकी है हमारी कंप्लीट, यूनिट भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। इफ यू होपफुली यूनिट आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।